So guys, let's start with another new chapter here. Now what is this chapter known as? Where is this chapter used? What is what we are expected to do in this chapter? Let's try to understand. Book बंद कर दे बेटा. Mostly कुछ लिखने का नहीं है अभी हम लोग को आज. Interest rate risk management. Now guys, 80% of your syllabus is designed only to make sure that you learn how to mitigate risk. You learn how to avoid risk. So if I talk about forex, in forex also we learn how to avoid that risk. If we talk about derivative का तो जन्म ही उसके लिए हुआ था कि भाई आपको रिस्क अवॉइड करना है. अब यहां पर आ रहे हैं हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट एंड दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट. If we talk about interest rate risk management, I want to understand that what is the risk here. See, if you do not understand the risk in all the subject, as far as your derivatives and forex was concerned, we always see it from the three perspective. We see it first from the perspective of a speculator. Speculators से आपको सीखना कुछ भी नहीं है. आपको सिर्फ ये देखना है कि स्पेक्युलेटर को नुकसान या फायदा कितना हुआ. That's it. Then we learn it for a hedger. For a hedger, we try to tell them कि boss, you don't worry. First thing, what is the basic premise for a hedger? When can somebody hedge? Somebody can hedge when he or she has an open position. अगर open position ही नहीं होगा तो कोई point ही नहीं है. And then we talk about arbitrage, right? That's what we have seen in forex derivative and now interest rate risk management. So if I talk about interest rate risk management, थोड़ा नया है हमारे लिए, okay? Comparatively, definitely lighter unless some जो है वो है types moments of institute. But otherwise it is better. So if I talk about interest rate risk management, what is the risk? What is the risk which we are trying to manage? Okay, just as the name suggests, and BCom pass out everyone, we can say sir, risk is interest rate. But what in interest rate is the risk? I just want to understand. Yes, fluctuation. बेटा fluctuation के अलावा कोई risk है ही नहीं. आप मेरी बात समझो. You can be investor. Or if you don't mind, I can just call you lender. Okay, you can be investor or you can be lender. If you are an investor or you are a lender, I repeat, if you are an investor or you are a lender, you try to understand you are receiving interest or you are paying interest. See, all this might sound very stupid, but this is the exact place where we are going wrong. Okay, we did something which we felt very interesting was call and put, and when we did strategies, that is where we started fluctuating our answer. That risk I don't know how I'll mitigate. So if you are an investor or lender, आपको पैसा मिलने वाला है, और अगर आप borrower हो तो आपको पैसा पे करना है. अब रिस्क किसके पास है दोस्तों? रिस्क किसके पास है? Let us define who has the risk. To be very honest, both of them have a risk. जिसको पैसा मिलने वाला है उसको क्या रिस्क है? इंटरेस्ट कम हो जाएगा. और जिसको पैसा देना है उसको क्या रिस्क है? बढ़ जाएगा. करेक्ट. दिस आर द ओनली टू रिस्क वी हैव. सो वन रिस्क इज कि भाई पैसा बढ़ जाएगा, अदर रिस्क इज कि पैसा कम हो जाएगा. अब इसको और समझने के लिए लेट अस मूव फॉरवर्ड. ओके, सो दिस आर द टाइप ऑफ रिस्क विच वी विल ट्राई टू मैनेज. ओके, एंड देयर आर शॉर्ट स्ट्रैटेजीज. मस्त है, मजा भी आएगा. Now for this, you will have to understand interest rate nicely first. What are the type of interest rate available in the market? So I don't know, I'm sure we have done it somewhere in the inter FM you could have come across. But if I can still go on to the point, what are the interest rate? Then guys, there are two type of interest rate available in the market. One is known as fixed interest rate. One is known as what beta? Fixed interest rate. Other is known as floating interest rate. Fluctuating nahi beta. Other is known as what beta? Floating interest rate. Have you heard about floating interest rate? One is known as fixed interest rate and other is known as floating interest rate. Sir, what do you mean by fixed interest rate and what do you mean by floating interest rate? Let's try to understand that. So bachcho, you may be an investor, you may be a borrower, you may be a lender. Everybody has one sort of risk over here कि बॉस मेरे को पैसा कम ना मिल जाए या मेरे को पैसा ज्यादा ना देना पड़ जाए, और उसको यही टेंशन है कि मेरा इंटरेस्ट रेट चेंज होगा. बट इंटरेस्ट रेट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिफाइन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट. सो यू मे हैव अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट or you may have a floating interest rate. Let us define what is fixed interest rate. Fixed interest rate is 8% per annum, maybe 9% per annum, or whatever in that genre they have given. What is floating interest rate?
what is your floating interest rate? तो बेटा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में ना सबसे पहले एक रेफरेंस रहेगा. फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इट वुड बी दिस प्लस समथिंग. I repeat, what would be the floating interest rate? Floating interest rate will always be this plus something. Now what is this? That is underlying reference given to us. In most famous, in the very famous term, we can call it as LIBOR. You call it a LIBOR or you call it LIBOR, whatever you want to pronounce it as. So it is LIBOR. What is LIBOR? You've heard about it, guys. Come on. London Interbank Offer Rate. London Interbank Offer Rate plus 1%. अब ये यहां पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में कांस्टेंट क्या है? ये 1%. उसको बेसिस बोलता है. ओके, सो नाउ ये पढ़ा ये सब तुम लोग ने. नाउ तो सिखाओ थोड़ा थोड़ा. फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वुड बी व्हाट? योर लिबोर प्लस 1% और एनी अदर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट. यू नो क्या क्या क्या? MRR. व्हाट इज MRR? मार्केट रेफरेंस रेट. वह बहुत कम यूज होता है अपने एकेडमिक में. योर वी अनदर फेमस वी यूज इज MIBOR, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट. आई रिपीट, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट. ओके, बस इतने ही है. आप है ना इंडिया की हर सिटीज में डिबोर बीबोर ऐसा नहीं है. इसमें दिल्ली, बैंगलोर एंड ऑल. सो आप IPL टीम घर पे बनाओ. यहां पर इट इज लिबोर और MIBOR इज अ वेरी कॉमन रेट. वैसे ही and you may have more and more reference, underlying reference based on which you will be defining. And so what have we started? We started with interest rate risk management. What is the risk? Risk is the fluctuation, very simple fluctuation. Who will face that risk? Both of them will face the risk. If you are an investor, you face the risk कि आपको कम पैसा मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया. इफ यू आर एन बोरोवर तो भी आपको रिस्क है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया. तो कौन रिस्क ले रहा है? दोनों जन रिस्क ले रहे हैं. इधर तक क्लियर? एवरीबडी क्लियर? So here, before I take it ahead, now what I want people to understand, please try to understand. Risk को कैसे mitigate करेंगे? We will discuss. But before we discuss this risk mitigation, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं. रिस्क किसको है? दोनों को है, बोरोवर को भी, इन्वेस्टर को भी. तो मैं वो छोड़ रहा हूं. ओके, इवन इफ यू आर एन इन्वेस्टर और यू आर अ बोरोवर, यू हैव अ रिस्क. Who will have a risk? I'm not talking about borrower and investor right now. The one who is having a fixed interest rate, either receipt or payment, or the one who is having a floating interest rate, either receipt or payment. Again, I'm saying, who has the risk? The one who is having a fixed interest rate or one who is having a floating interest rate. Who has that risk? Bolo bachcho. Again, nonsense. A very common mistake people do. Both of them has a risk. Both of them has a risk. Krutat, can you please give a good example why a fixed interest rate bearer will have a risk? Any idea? ऐसे just general. Fixed interest rate है. मैंने investment कराया, मेरे को वहां पर 10% पर annum मिल रहा है. I'm an investor. मेरे को 10% पर annum मिल रहा है. मेरे को रिस्क नहीं चाहता तो मैंने फिक्स लिया. अब मेरे को क्या रिस्क है? Come again. 12. हाँ, आपका फ्लोटिंग रेट बढ़ गया बेटा. So you try to understand, आपने फिक्स ले लिया. So lot of time people does this mistake. A lot of time that they believe that since we have a fixed interest rate, we don't have any risk because we have fixed. Arey, you have fixed, but your risk is what you know. Now it's a notional risk. That bad feeling. It is just like that same story. The line जिसमें आप खड़े रहते वो ही नहीं आगे जाती. So the whole idea is very simple. अगर आप फिक्स इंटरेस्ट रेट लेकर बैठे हो, बोरो है कि लैंडिंग है, आपको ये टेंशन है कि उधर साला फ्लोटिंग में फायदा हो रहा है. और अगर आप फ्लोटिंग लेके बैठे हो तो आपको ये टेंशन है कि फ्लोटिंग ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, हमको फिक्स में ज्यादा फायदा है. करेक्ट? अब ये रिस्क को मिटिगेट कैसे करेंगे? तो फटाफट ऐसे ही थोड़े बहुत आपको ऑप्शंस देता हूं. सो दिस इज वेयर वी आर एंटरिंग इनटू डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू कीप अ वेरी लो profile in terms of notes in this particular chapter. All notes have been very nicely given here. We will just at the end में reference ले लूंगा and we'll do it. अभी तुम लोग खाली ध्यान दो. Guys, the first क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? What all? Smith, मैं भी बोलता हूँ. So there are 4 things which we are going to learn. The first thing we want to learn is interest rate swaps. Interest rate swap. Sir, what do you mean by interest rate swap? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है.
So if I talk about swap, you try to understand Smith and Dhawal. Smith has a fixed interest rate payment. Dhawal has a floating interest rate payment, floating plus 1%. तो स्मिथ हैज अ फिक्स इंटरेस्ट रेट पेमेंट, धवल हैज अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेमेंट. मेरे को लग रहा है, वो बोला रहा है जिसके पास जो है वो उसको अच्छा लगेगा ही नहीं, तो मेरे को लग रहा है यार फिक्स ज्यादा अच्छा है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम स्मिथ को लग रहा है कि यार फ्लोटिंग ज्यादा अच्छा है. तो हम दोनों या तो वॉलेंटरली मिलेंगे कहीं पे, या तो कोई इंटरमीडिएट हमारी हेल्प करेगा हम लोगों को मिलाने में. और यहां पर हम दोनों मिलने के बाद व्हाट विल हैपन इज स्मिथ विल ट्रांसफर हिज फिक्स पेमेंट टू मी and I will transfer my floating payment to him. और ये स्वैप करने के बाद अब अभी एंटर करने के बाद दिस डील, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट. आफ्टर एंट्रिंग इनटू दिस, नाउ स्मिथ का सारा पेमेंट क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग, और मेरा पेमेंट क्या हो जाएगा, फिक्स. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दिस इज इंटरेस्ट रेट स्वैप. दिस इज गोइंग टू बी अवर टुडेज टॉपिक ऑल्सो. उसके अंदर 3 पार्ट है, शायद आज हम लोग 1 या 2 ही कर पाएंगे, बट दैट इज योर इंटरेस्ट रेट स्वैप. दिस इज वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. यू अंडरस्टूड स्वैप्स? So we will swap the payment liability. Basic presumption है कि आपका underlying asset दोनों के अंदर principal amount is same. So we'll discuss that. Then come interest rate forwards. Interest rate forwards. I am sure I don't want to spend more time here. Interest rate forward. What is interest rate forward? Interest rate forward में हम सबको मालूम है आत्मन के पास बहुत पैसा है. मैंने आत्मन को बोला यार आत्मन तू यूएस जाएगा, उसके पहले मेरे को पैसा दे दे. बोलता है सर ये वाला इंटरेस्ट रेट चला. मैं नहीं नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे को तो 6 महीने बाद चाहिए. तो बोलता है 6 महीने बाद आओ. बट बोला यार 6 महीने बाद बढ़ जाएगा, तो आज कितना भाव चला? बोलता है सर आज 10% है. मतलब सर 6 महीने बाद? तो बोलते सर कम आफ्टर 6 मंथ. मतलब नहीं लेट्स फिक्स इट टुडे, मेरे को डर लग रहा है. तो बोलता है सर तो एक काम करते हैं, मेरे को पता है कि 6 महीने के बाद बढ़ने वाला है, मैं आपको 11.5 में नक्की करता हूँ. नाउ दिस इज योर इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड. वी हैव सीन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन ऑल द सिनेरियोज. सो इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड सेम थिंग. ये हम लोग डायरेक्टली वी वर ओटीसी. ओटीसी मीन्स व्हाट बेटा? थैंक यू सो मच. सो नाउ सेम इंटरेस्ट रेट, आई रिपीट इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स. सो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में क्या होगा? सेम ही थिंग व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, बट हियर इट वुड बी थ्रू एक्सचेंज. एंड देन कम ऑन गाइज, योर फेवरेट. आप लोग भूल गए, हम लोग ने इतना किया है अभी, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन. So these are your 4 instruments which we will be basically dealing with. Not only this, if I can just, your entire book is also, your questions and all we have divided also in such a manner कि आपको directly ये चारों का theory अलग, चारों के sums भी अलग, ऐसे करते करते हम लोग एक एक करके we will be closing it out. Fair enough everyone? Sure everybody understand? So our today's agenda is, first thing first. Now guys, let's start. Let's start about your interest rate swaps. But before interest rate swap, I just want to understand that people have more clarity about your LIBOR, MIBOR and fixed interest rate. How are they different? And what is the difference does it make? What are the terminologies common? Okay. तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, फिक्स 8% per annum. What does this mean? Throughout the year, you don't have to worry at all. Your commitment remains how much, beta? Fixed 8%. If I talk about floating interest rate, floating interest rate में दोस्तों आप समझने की कोशिश करें. We've decided LIBOR plus 1%. LIBOR plus, तो अगर मैंने LIBOR plus 1% बोला है, तो what does LIBOR stands for, beta? LIBOR is London Interbank offer rate, or for that matter, market reference rate, my friend said. For that matter, MIBOR is another reference. In all these scenarios, ये कब चेंज होता है बेटा? दिस ऑल चेंज डेली. इन लोगों का जो फ्लक्चुएशन है ये डेली है. इसका मतलब क्या रोज सुबह उठ के मेरे को ऐसा टेंशन लेने का कि भाई मेरे को आज कौन सा इंटरेस्ट रेट लगेगा, मेरे को कल कौन सा इंटरेस्ट रेट लगेगा, मेरे को परसों कौन सा इंटरेस्ट रेट लगेगा? तो वैसा नहीं होता. सो व्हेन योर LIBOR और MIBOR plus 1% और plus 0.5%, whatever is decided, along with that is also decided reset period. What is decided guys? Reset period. What is reset period? Reset period is एक बार नक्की होने के बाद, say for example reset period is 3 months. Say for example reset period is how much guys? 3 months. तो आपको 3 महीने तक बेटा you don't have to worry. For next 3 months your rate is whatever was the LIBOR at the beginning. Hello,
वो उतना फिक्स है। ये समझ में आता है तुम लोगों को? फिर वापस 3 months के बाद वी विल अगेन रिव्यू द लिबोर and again the interest rate will change. So this will depend upon your reset period and the underlying reference. Fair enough? Can we go ahead? Sure. Now, so I wanted people to understand this. This is clear beta, fixed and floating? एकदम clear? और ऐसे ही होता है boss in the home loan interest rate also. आप imagine करिए HDFC आपको offer कर रहा है home loan at fixed interest rate and floating interest rate. Now हम लोगों को लगेगा यार कौन रिस्क लेगा, let's go for fixed. But उसके बाद गवर्नमेंट अनाउंस, RBI अनाउंस द रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट, सो उसका एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा. So you will not get that advantage. So all this does matter. So now before I start doing anything further, I wanted people to have a clarity about this. Now having clarity about this, let me just define इंटरेस्ट रेट रिस्क है प्लीज, क्योंकि इसके अंदर है ना लफड़ा होगा. इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया. चलो डन. नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क? दो चीज है. सपोज करो दो टाइप के इंटरेस्ट गेम है. एक है फिक्स इंटरेस्ट रेट और दूसरा अवेलेबल है मार्केट में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट. वन इज योर फिक्स इंटरेस्ट रेट, वन इज योर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट. मेरे को फटाफट बोलो. आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट. अभी हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस भी कर दिया है. खाली आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दिस एंड देयरफॉर आई एम इंकिंग इट डाउन. लेट्स टॉक अबाउट इट. सो Agam, you tell me, if you are a fixed interest rate bearer, I repeat, if you are a fixed interest rate bearer, there are two possibilities. What are the two possibilities? You may be either borrower or you may be lender. क्या बोला वो, क्या बोला? Or you may be either lender. ठीक है. अब तू मेरे को बोला अगर तू borrower है तो what risk do you possess? What risk do you possess? It's a fixed interest rate you have. बोरोवर हो, आप बोरोवर हो, आपने ऑलरेडी फिक्स इंटरेस्ट रेट में घुस गए हो, आपने ऑलरेडी एग्री करके दिया है कि बॉस मैं 8% इंटरेस्ट दूंगा पर एनम. अब आपको क्या रिस्क है बोलो. सो योर बेटा, आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट विल फॉल. फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट विल फॉल. And if you are a lender or if you are an investor, तो what risk would you have now? आपको तो फिक्स मिल रहा है ना 10%, तो आपको क्या रिस्क है? आपको ये रिस्क है बच्चा कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा. फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट विल राइज और फॉल? विल राइज. सो यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ रिस्क. सेम थिंग हियर. इफ यू आर, आई रिपीट, इफ यू आर अ बोरोवर हियर, चल आगम अभी तो बोल. यू आर ऑलरेडी अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होल्डर. तू बोरोवर है, अब तो तेरे को क्या रिस्क है? लास्ट टाइम तो फिक्स था इसलिए रिस्क था. अभी तेरे पास क्या रिस्क है बोल? फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट विल डिक्रीज, राइज, इंक्रीज. सो नाउ सिंस यू हैव अ फ्लोटिंग रेट, इज करेक्ट गाइज, फ्लोटिंग रेट मे राइज एंड योर, इफ यू आर एन इन्वेस्टर और यू आर अ लैंडर, व्हाट रिस्क वुड यू नाउ पोजेस? कम ऑन. Floating rate may fall. Correct? Now, throughout this game, be it your interest rate swap, be it your interest rate forward, be it your interest rate futures or interest rate option, all said and done, these are the 4 risks which we are trying to mitigate. Depending upon who our client is, what is his requirement, and so on. Now, let's talk more on interest rate swaps. So, अभी इन लोगों पे एक सेकेंड है. Here, if I can read this out for you. What is interest rate swaps? That is our first topic. An interest rate swap is an agreement between two parties to exchange one stream of interest rate payment for another over a set period of time. The two sides of swap are referred to as lag. Now let's try to understand what is this trying to say. Okay, let me give you an example. Say for example that there is one Mr. Milind, and there is one Mr. Rahul. Both are my friends. Very commonly used example for me. One is Mr. Milind, another is Mr. Rahul. Now what I want you guys to understand, Imanshi, that इन दोनों के बीच में एक चीज कंफर्म है. अगर हम स्वैप के बारे में बात कर रहे हैं
तो दोनों का पोजीशन सेम इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट तो नहीं हो सकता. तो यहां पर से फॉर एग्जांपल हम अंडरलाइन एसेट की बात करें 50 लाख की, उन लोगों के पास नोशनल एक्सपोजर है 50 लाख का. अगर उन लोगों के पास 50 लाख का एक्सपोजर है, ओके, मिलिंद इज राइट नाउ पेइंग. नाउ ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों, प्लीज समझने की कोशिश करना. मिलिंद हैज एन एक्सपोजर 50 lakhs पेएबल आफ्टर पेएबल फॉर 1 year. ओके, आफ्टर 1 year ऑलरेडी उसने लेके रखा है 50 लाख. उसके ऊपर मिलिंद हैज एन फिक्स इंटरेस्ट एक्सपोजर. He has a fixed exposure. And Rahul has LIBOR plus 1%. Rahul has what beta? LIBOR plus 1%. Up 50 lakhs clear. Payable after 1 year. And maybe if I can make it a little more interesting, let's make it payable after 3 years. Rest period 6 months. What does it mean, guys? रेस्ट पीरियड 6 months का मतलब क्या है? कम अगेन बेटा, आफ्टर 6 month वापस हम लोग लिबर को चेक करेंगे. हर 6 महीने लिबर को चेक करते 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 आपका पीरियड आएगा. वंस सर, इज दिस लाइक एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? यू आस्क मी बिफोर, आई डोंट नो. हाँ, यस बेटा, दैट नोशनल लॉस अगर बढ़ गया वो सब नोशनल रिस्क जैसा है उसका. परफेक्ट. वॉकिंग फॉरवर्ड नाउ, we are just trying to understand the terms nicely. Now what is happening? What is the swap? मिलिन को ऐसा लगता है, दोनों ने बोरो करके रखा है, मिलिन को ऐसा लग रहा है कि फ्लोटिंग कम होने वाला है. मिलिन believes that floating rate is going to go down. At the same point of time, Rahul believes floating is going to go up. Only if such beliefs are there, then only such people can meet and exchange. If both of them believe that floating is going to go up and both of them believe that floating is going to go down, so then there is no swap. What we are talking about is right now is interest rate swap. So here if this happens, मिलिंद को लग रहा है यार कि भाई फ्लोटिंग कम होने वाला है, तो मिलिंद को जो करेंटली फिक्स पेमेंट पे करता था 50 लाख, उसको 3 साल का पेमेंट है, 3 years लोन टर्म है, और वो फिक्स इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं 9%. And Rahul is currently paying LIBOR plus 1%. So if such feeling exists in both of them and both of them meet together, in that case the swap will take place. Now what will be the swap term? आप समझने की कोशिश करिए. सबसे पहले मिलिंद अब बोलेगा कि भाई साहब ठीक है, आज से 9% तू पेमेंट करेगा. सब कैसे होगा धीरे धीरे मैं आपको आर्बिट्रेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, स्पेकुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, हेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा. But right now I want you guys to understand कि हो क्या रहा है. Here they are swapping. What are they swapping? The payment terms they are swapping. Are you getting this clearly? And from here now what will happen? Here they have decided, चलो okay no problem. तो आज के बाद आप LIBOR plus 1% आप दोगे. अब यहां पर तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो शायद हम लोग मैसअप कर सकते हैं एग्जाम में. So firstly I will like to read this statement again. An interest rate swap is an agreement between the two parties. Whose two parties here? Milind and Rahul. To exchange one stream of interest payment for another over a set of period of time. What do you mean by one stream of payment and another stream of payment? So he had a fixed stream of payment and he had a floating stream of payment. Did you understand the meaning of stream of payment? Clear beta? Now the two sides of swaps are referred to as legs. ये जो ग्रीन कलर वाला ऊपर वाला दिख रहा है, ये जो नीचे का दिख रहा है आपको LIBOR plus 1, these are known as legs. ये legs है, these are swap legs. ये सब बहुत मैटर करेगा जैसे हम आगे जाएंगे. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आएंगे, दिमाग भी लगेगा थोड़ा. विल ट्राई टू फिगर दैट आउट, कहां से आएगा वो. सो नाउ योर, सो legs are clear, legs of swaps. Now in an interest rate swap, two parties will agree to first term, fixed rate, floating rate, benchmark, commonly LIBOR और MIBOR. What is benchmark बेटा? What वो रेफरेंस बोला था ना मैंने आपको, या तो LIBOR होगा या तो MIBOR होगा, वो बेंचमार्क होगा. नोशनल प्रिंसिपल एंड पेमेंट फ्रीक्वेंसी. यहां पर एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने की. वी आर एंटरिंग इनटू इंटरेस्ट रेट स्वैप. दिस इज वन ऑफ द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट. प्लीज फॉर गॉड सेक अंडरस्टैंड दैट देयर हैज गोइंग टू बी नो स्वैप ऑफ principal amount ever.
कभी भी प्रिंसिपल अमाउंट को नो छेड़खानियां दोस्तों। यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट की कोई बात हो ही नहीं रही है। यहां पर जो भी हो रहा है किसके बारे में हो रहा है? इंटरेस्ट रेट स्वैप। सो स्ट्रीम होंगे आप, मेरा फिक्स स्ट्रीम है, आपका फ्लोटिंग स्ट्रीम है। लेट्स एडजस्ट, डिसाइड कर देता है टर्म्स क्या रहेगा, फिक्स इंटरेस्ट आपका कितना है, मेरा बेस रेट यानी बेंचमार्क रेट क्या है, एंड सो ऑन वी विल मूव फॉरवर्ड। इज दिस फैक्ट वेरी क्लियर? श्योर, कैन वी गो अहेड? नाउ देयर इज समवन हु इज नोन एज स्वैप बायर and then there is someone who is known as swap seller. Now this is very fancy. Who is the swap buyer and who is the swap seller? लगाओ मटका, चलो लगाओ. Who is the swap buyer and who is the swap seller? Any guess? ऐसे मटका ही खेल रहे, ट्रस्ट में, शिकायत तो है नहीं. स्वैप बायर कौन है? बोलिए मनशी. राहुल इज अ स्वैप बायर. व्हाई? जस्ट ओके सर, मटका ही लगाना था. ठीक है. नाउ धीर तू बोल बेटा. नो आइडिया? ओके, सो आई टेल यू बेटा, दिस इज वेरी फैंसी दो, makes I don't know what sense, but then sometime they will use this word buyer and seller. So I don't want people to mess it up with. The one who will buy LIBOR plus is the swap buyer, यानी कि जो LIBOR खरीद रहा है, फिक्स देकर LIBOR खरीद रहा है, ओके, वो उसको हम स्वैप बायर बुलाएंगे. स्वैप सेलर किसको बुलाएंगे हम लोग? किसको बेटा? जो लिबॉर बेच रहा है. गॉट इट? सो व्हाट दीप सेड, दीप का मटका राइट. सो हियर व्हाट आई वांट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड इज मिलिंद विल एक्ट एज अ बायर. व्हाई विल मिलिंद एक्ट एज अ बायर? बिकॉज मिलिंद इज नाउ एक्सचेंजिंग फिक्स्ड स्ट्रीम. बेटा इसको हम क्या बुलाएंगे? दिस इज नोन एज फिक्स्ड लेग. दिस इज नोन एज व्हाट बेटा? फिक्स्ड लेग. एंड दिस इज नोन एज फ्लोटिंग लेग. आर यू ऑल गेटिंग दिस क्लियरली? एकदम क्लियरली. फिक्स लेग, फ्लोटिंग लेग समझा आप लोगों को? 100%. जाओ मैं आगे. सो बेटा ये फिक्स लेग और फ्लोटिंग लेग. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्वैप्स अवेलेबल? As I told you guys, today our objective is only understanding swaps, and that also we will frame for you questions, get that clearly, then maybe next lecture we will go ahead. But इधर तक आपको समझा? And why I wanted you guys to know all this term, because ये सब नया है. देखो दोस्तों, what is fixed leg, what is floating leg, who's a swap buyer, who's a swap seller, and so on. Now Agam, there are two type of swap beta. One is known as plain vanilla swap. Plain vanilla swap. कहां पे सुना है आप लोगों ने ये? And other is known as basis swap. One is your plain vanilla swap and other is your basis swap. बहुत इंपॉर्टेंट है. Plain vanilla swap. Sir, what do you mean by the word plain vanilla? है टेक्स्ट बुक में है बेटा, भरोसा रखो इसी का. What is plain vanilla swap? First of all, what is plain vanilla swap? So in plain vanilla swap, guys, it's a very very simple. Dhawal had a fixed payment of 10% per annum on 50 lakh for 5 years. Karthik has a floating payment on 50 lakh for 5 years, LIBOR plus 0.5%. Now guys, when I and Karthik come and we swap, here you try to understand, one is sharing fixed leg and he is sharing floating leg. तो जब फिक्स के सामने फ्लोटिंग और फ्लोटिंग के सामने फिक्स, इसको हम बोलते हैं प्लेन वेनिला स्वैप. आई रिपीट, फिक्स के सामने फ्लोटिंग, फ्लोटिंग के सामने फिक्स, इसको हम बोलते हैं प्लेन वेनिला स्वैप. नाउ कम व्हाट इज बेसिस स्वैप. व्हाट इज बेसिस स्वैप? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है. व्हाट इज बेसिस स्वैप? बोल बेटा. ओके, तो मतलब आप ये समझो, मेरा लिबॉर प्लस 1% पे मैं लोन दे रहा था, तो धवल वॉज पेइंग लिबॉर प्लस 1% पे लोन, एंड माई फ्रेंड मनन, ही वॉज हैविंग समवेयर, उसने पूरा कॉन्टैक्ट लगा कि लिबॉर प्लस 0.25% पे वो लोन पे करा. ओके, और हम दोनों आ गए और हम लोग ने एग्री किया, लेट्स स्वैप. अब मैं लिबॉर प्लस 0.25 दूंगा और मनन लिबॉर प्लस 1% देगा. हाँ, क्यों अब ना बोल रहे?
लिबोर मतलब लिबोर तो लिबोर होता है बेटा, हम कौन होते हैं एडजस्ट करने वाले? So when we talk about basis swap, beta, it is so obvious, it is so funny also. It will never be LIBOR exchange or LIBOR plus 1% or LIBOR plus 0% exchange. It would be only when your benchmark will change. Only when your benchmark will change. So it could be LIBOR के बदले MIBOR. So what I will do is कि भाई साहब आप मुझे LIBOR plus 1% दे दीजिए, मैं आपको MIBOR plus 0.25 दे देता हूं. या तो फिर यहां पर हमारे पास कृतार्थ भी आ गया, वो MRR plus 0.5%, whatever it can be. So when your benchmarks change, that is what kind of swap we known as LIBOR. That is your basis swap. What is your plain vanilla swap? समझा आप लोगों को एकदम? Plain vanilla swap is very famously also known as generic swap, and this is known as your non-generic swap. ये सब खाली आप लोगों को बाद में तकलीफ न दे इसके लिए. Now, can we go ahead? So we can again refer it out here. So we've done interest rate swap, meaning here this is your plain vanilla swap. You can check it out here. Now is your plain vanilla swap जो मेरे को थियोरी लिखवाना था आपसे, बट हम नहीं लिखेंगे. खुद लाउडली रीड कर बेटा. कर बिंदास. कम ऑन ब्रो. कंपनी बी उसके सामने क्या कर रहा है? पेज कंपनी ए एन अमाउंट इक्वल टू 1 year LIBOR प्लस 1% पर एनम. तो यहां पर वी कैन ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग इज दिस गाय इज पेइंग 6% पर एनम, दिस गाय इज पेइंग LIBOR प्लस एनम. यहां पर 20 million दोनों के लिए सेम है. अंडर प्लेन वेनिला स्वैप one leg of interest is fixed and other leg is floating. इधर तक क्लियर एवरीवन? चल मनन अभी ये रीड कर तू बेसिस स्वैप. So before I take you from a perspective of a speculator and a perspective of the hedger, this is what at least basic I intend to do today. I would also want people to know. Now very interesting is interest rate quotes कैसे देंगे? What are interest rate quotes? Interest rate quotes. Now let us for some time focus on plain vanilla swaps. Okay. अब interest rate quote क्या है? So interest rate quote है LIBOR versus 9%. What does this mean? What does this mean? LIBOR versus 9%. यानी कि जो फिक्स्ड लेग वाला है उसका क्या इंटरेस्ट रेट है और जो फ्लोटिंग लेग वाला है उसका LIBOR. क्लियर? अब इसके अंदर मैं 2 बार आपको करवाता हूं. पहले विदाउट स्वैप डीलर. यहां पर कोई स्वैप डीलर नहीं है, मतलब आप लोग ही मार्केट में मिल लिए एक दूसरे को, आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है. अब अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो आगम ने बोला कि LIBOR वर्सेस 9%. तो व्हाट डिड वी डिसाइड इज यार. So what will happen? One person will receive LIBOR. Agam will receive LIBOR and pay 9%. That means Agam already had a fixed leg. Now he is buying swap. So if he is buying swap, he will receive LIBOR and pay 9. So this is basically the buyer. Correct? This is basically the buyer. Now let's talk about the seller. Suppose Agam was seller. Now what will Agam do? He will pay. Come on. He will pay interest at LIBOR and receive. Come on. Interest at 9%. Fair enough, everybody? Sure? ये क्लियर? ये मेरा टॉपिक फिलहाल था भी नहीं. मेरा टॉपिक ये था बच्चों, अगर विथ स्वैप डीलर आ गया. स्वैप डीलर बेसिकली कौन होगा बच्चों? एक्सचेंज होंगे, बैंक्स होंगे. अब ये लोग आ गए. अब अगर ये लोग आए ना बच्चों तो गेम में मजा आएगा. अभी गेम क्या है ध्यान से देखना. ओके. सो द इंटरेस्ट रेट इज, वो लोग ने कोट क्या दिया है देखना. कोट गिवन इज LIBOR
plus, oh sorry, LIBOR versus 9.5%. LIBOR versus 9.5%. अगर ऐसा कोड दिया है तो आई वॉन्ट पीपल टू आंसर हाउ विल यू गो अहेड. अब दो बंदे को लिख देता हूं इधर, स्वैप बायर और कस्टमर रिसीवर, एंड योर बेटा चलो लिबोर वर्सेस 9.5%. बोलो. So if you are a buyer, what would you receive? What would you pay? I repeat, what would you receive if you are a buyer? If you are buying LIBOR, if you are buying swap, what would you receive? Come on, you'll receive LIBOR. And what will you pay, guys? 9 or 9.5? Come on. 9 point? Are you getting this clearly? आप जब भी पे करोगे आप महंगाई पे करोगे. दिस इज लाइक योर bid ask. This is like your bid ask for all those who have done forex. For those who have not done forex, आप ये समझने की कोशिश करो बैंक आपसे ज्यादा ही लेगा और बैंक आपको हमेशा कम ही देगा. बस इससे बड़ा अंडरलाइन कुछ है ही नहीं. आपसे ज्यादा लेगा आपको कम देगा. सो योर नाउ रिसीव LIBOR, पे हाउ मच बेटा? 9.5%. सिमिलरली इसी के अंदर सपोज if you were seller, if you are a seller, आप बेच रहे हो तो what would you do now? Receive how much? क्योंकि अभी आप बेच रहे हो तो आप LIBOR दोगे. Hello. So customer receive how much? Louder. 9%. And pay how much? Louder. Come on guys, give me this. Pay how much? Pay how much? LIBOR ही होगा. कोई 0.5% एडजस्ट मत करना उधर, क्योंकि यहां पर जो बैंक का कमीशन है वो बैंक ने कमीशन फिक्स्ड लेग में रखा है कि फ्लोटिंग लेग में रखा है? बैंक ने उसका कमीशन फिक्स्ड लेग में रखा है. सो डोंट डिस्टर्ब योर फ्लोटिंग लेग. नाउ LIBOR. Are you there with me? Sure? Can we go ahead? 100%? Chalo. Now suppose they have given like this. LIBOR/LIBOR plus 0.25% versus 10%. LIBOR plus LIBOR 0.25% versus 10%. Come on guys, quick answer. Let us say that you are a receiver, you are a buyer. If you are buying, how much would you receive? You will receive LIBOR or you will receive LIBOR plus 0.25? Louder. You will receive LIBOR. You will receive LIBOR. Are you all there with me? And when you are paying, you will pay what? Come again? You will pay 10%. Similarly, in other case, tell me one thing. If you are a seller, तो अब आपको पे करना पड़ेगा LIBOR. तो आप रिसीव कितना करोगे? You will receive only 10%. But when you are paying, you will have to pay how much? LIBOR plus point. Not understood. Are you getting this clearly, guys? अभी है ना हम लोग है ना जैसे कर रहे हैं ना वो हमें अच्छा भी लग रहा है और ये इजी भी है. बट व्हाट हैपेंस व्हेन इट कम्स इन द सम, दिस इज द प्लेस वेयर स्टूडेंट विल मेस अप. सो माई ओनली हम्बल रिक्वेस्ट गाइज, बी अल्ट्रा केयरफुल. सबसे पहले ये बायर है, ये सेलर है, ये बायर है और ये सेलर है. दोस्तों मेरे ख्याल से बाकी सब तो लिखा हुआ है उधर. ये मेरे को चाहिए, तुम लोग लिखो ना प्लीज. Okay, give heading interest rate swaps and then you copy this interest rate quotes. You just copy this right. A copy किया. हमारा एक एग्जाम्पल प्रॉपर लिखो छो. आई एम तो जस्ट सेइंग हाउ यू हैव टू सी दिस. राइट नाउ हाउ विल यू सी दिस? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? हम बायर सेलर और डीलर बीच में रख दिया हम लोगों ने.
don't see it that way. You just see it that way that you want to pay LIBOR. You went to the dealer and you said, "यार boss, I am already paying fixed leg. Can you give me LIBOR and I will give my fixed leg to you." Correct. But इधर सामने वाला अगर डीलर रहेगा ना बेटा, तो वो तेरे से 9.5 लेगा. सामने वाला अगर तू और मैं स्वैप कर रहे हैं तो हम लोग प्लेन वेनिला डायरेक्ट स्वैप कर लेंगे विदाउट कमीशन. करेक्ट. वो उसने कमीशन वाले ने उसने क्या डिसाइड किया? ये दोनों एग्जांपल में क्या हो गया बेटा? इन बोथ द केसेस he is charging. In the first case he is earning from the fixed leg, in the second case he is earning from the floating leg. It will be, so my point is, in either of the scenario you decide whether you want to sell LIBOR or you want to pay LIBOR. You got it? In that case, if you want to sell LIBOR, so if you want to sell LIBOR, so basically you are a seller and this is the quote available in the market. Only this is the quote. Don't mix the other two quote. So if you want to sell LIBOR, what he say? Okay, so you pay me LIBOR, you will get only 9%. But if you are buying LIBOR, suppose, so you will have to pay 9.5%. Clear, Marvi? This is one scenario. Now, the second quote which is available in the market is this. So you have to check what are the quotes available. These both quotes are not same. In this quote, what will happen? LIBOR and LIBOR plus 0.25% versus 10%. Now you already have fixed leg. You want to pay fixed leg or you want to pay floating leg? You are saying I want to pay floating leg. So you went to the dealer. तो डीलर क्या बोलेगा? ठीक है, आप एक काम करिए, आपका 10% मुझे दीजिए. आज के बाद आपका पेमेंट कितना हो जाएगा? LIBOR plus 0.25%. So you will pay me LIBOR plus 0.25% and I'll pay you 10%. करेक्ट. वो क्या कोड दे रहा है डीलर? मैं तो खाली आपको ये बता रहा हूं कि अगर बैंक का कमीशन है तो बैंक हमेशा आपसे ज्यादा लेगा और आपको कम देगा. वो मैं यहां पर समझा रहा हूं. गॉट इट? अब मजा आएगा. चलो, लेट्स टेक इट एज अ स्पेक्युलेटर. लेट्स इंट्रोड्यूस स्पेक्युलेटर फर्स्ट. नाउ गाइस, गिव हेडिंग साथ साथ में लिखते हैं तो क्या थोड़ा टाइम पास कम होगा. क्लियर? नाउ Marvi, after 3 example you will get your answer clear. Now take this. Interest rate swap speculator. Interest rate swap speculator. अब यहां पर कोट क्या अवेलेबल है? इंटरेस्ट रेट कोट्स अवेलेबल आर फिक्स लेग 9% था और फ्लोटिंग LIBOR plus 1% था. L plus 1. Okay, लिख. Now, in this scenario, clear? Everyone clear? Now, बच्चों, let us take. Yash is a speculator. Yash is speculator. अब बेटा speculator है ना, always will have to now guess whether the rates are going to go up or go down. Purely based on his speculation, right now he will take position. So we will create 2 positions. Situation 1, कि Yash expect that price will go up. Interest rates are going up. Which interest rates are going up? LIBOR or fixed rate? Come on. LIBOR. Fixed तो is already fixed. तो जो भी दुमताना होगा वो LIBOR में ही होगा. जब हम लोग ने इंटरेस्ट रेट रिस्क भी देखा था, यर एवरीवेयर वी केप्ट ऑन टॉकिंग ओनली अबाउट फ्लोटिंग, कि भाई फ्लोटिंग रेट बढ़ रहा है, फ्लोटिंग रेट कम हो रहा है, फ्लोटिंग रेट बढ़ रहा है, फ्लोटिंग रेट कम हो रहा है. तो वो जो भी हमारे एस्टिमेशन है वो सारे फ्लोटिंग के लिए ही है. तो अब ये प्रेडिक्ट कर रहा है, यश इज प्रेडिक्टिंग. यश को ऐसा लग रहा है, अभी लिखो मत, एक सेकंड रुक जाओ. सिचुएशन 1 ये है, he expect Yash expects that LIBOR will be greater than 8%. Why would I write 8%? Can somebody tell me this? Obvious है ना बेटा. अभी देखो ना, ये 9% है, ये LIBOR plus 1% है, तो 8 होगा तो 8 plus 1 ना. सपोज 8% है, करंटली भी 8% है, तो क्या ही फर्क पड़ता है? मैं फिक्स लू या फ्लोटिंग लू, बराबर. अब उसने फ्लोटिंग में मटका खेलने का है. ही इज हियर ओनली टू
speculate. So if he's here only to everywhere only to speculate, so then I want you to understand how will he make money or how will he lose money. So he expected, Yash expect that LIBOR is more than 8%. If he does that, will he buy swap or he will sell swap? Everybody just think about it. Please think about it. Whether will he buy swap or he will sell swap. People at home, BS, come on, quick, buy, sell, quick. दो ही ऑप्शन है बेटा, सेल एंड बाय. आगम तेरे को क्या लग रहा है बेटा? खाली बाय या सेल कुछ भी बोल के वापस हो जा. मटका ही लगा रहे हैं ना, तो ऐसे ही होते हैं स्पेकुलेटर्स. Buy swap, sell swap. Guys, if you all not answer, I will not be able to teach here. Please. So I have a fantastic buy, sell, buy. We have almost 50-50 vote at home. यार ये देखा अभी इंटरेस्ट रेट में भी हम लोग हो गए. चलो हिमांशी, buy or sell? Buy. Mahek? How many will support buy swap? Buy swap. Sell swap? Sell swap. Okay, fine. So, yes, beta. Why would you buy? When you buy, what will happen? Now, इधर देखो. So, and that is what we've written there also. इधर भी देखो ना. इधर देखो. If you're a buyer, if you're a buyer, look at this chart. This is so there in your book. This is there in your book. If you're a buyer, what will you receive? Customer will receive LIBOR and pay fix. ये clear हो गया? पक्का. अब इधर देखो. So now, if Yash is, what would you want to do? You are expecting it to be more than 8%. If you are expecting it to more than 8%, say you are expecting 8.5% or 9%, whatever you are expecting. So if you are expecting that, what would you want to do? You would like to pay LIBOR or receive LIBOR? You would like to receive LIBOR, beta? Pakka? Go ahead. Huh? You are a speculator. You are a not lender. You are not investor. आप प्योर मटका खेल रहे हो. वो अब जब आएगा ना स्पेकुलेटर, हेजर आएगा ना बेटा, तब योर पोजिशन विल बिकम बेटर. राइट नाउ यू आर व्हाट बेटा? यू आर अ स्पेकुलेटर. So if you are a speculator, you would like to receive this. So you would like to receive LIBOR and pay fix. ये clear है? बराबर बेटा. For this, what position you will have to take बेटा? For this, what position you will have to take? हाँ बेटा, buy swap. For this, what you will have to do is you will have to buy interest rate swap. थोड़ा डिटेल में लिखते हैं. Buy interest rate swap. अब मजा देखो. Buy interest rate swap. क्योंकि आपके पास अंडरलाइन कुछ था ही नहीं बेटा. ये आप सिर्फ मटका खेल रहे हो. आप मार्केट में स्वैप करके यू आर जस्ट प्लेइंग अराउंड. यू जस्ट वांट द पे ऑफ डिफरेंस. ओके. नाउ द फन पार्ट. व्हाट इज द फन पार्ट? एट द एंड ऑफ द ईयर, लेट्स मेक टू अजम्पशन. दो ही चीज हो सकती है. आपका एस्टिमेशन राइट निकला, आपका एस्टिमेशन फेल हुआ. नाउ इफ योर एस्टिमेशन इज राइट, इफ एक्चुअल LIBOR I am saying have become 7.5 or 9%. Now you tell me, if it have become 7.5%, so what is the advantage for you? Profit or loss क्या हो गया बोलो? आपको लॉस हो गया बेटा. Now you are receiving how much? 7.5 plus what? You are receiving 8.5, but you have to pay how much? You have to pay how much? 9%. So here you made a loss of, come on. So I would say pay the difference of how much? 0.5%. That is loss. Fine ना? Here अगर आपका एस्टिमेशन राइट निकल गया, जो आपको चाहिए कि राइट निकल जाए, तो आपको मिलेगा receive the difference. How much you will receive the difference of 1%. That is your profit. Why is this position beta? Here because you don't have to pay again. आपको आगे पे नहीं करना है. इसके लिए ये ओपन पोजिशन में this is exact position. Clear? Everyone clear?
कॉपी दिस फास्ट एंड क्रिएट सिचुएशन 2 नाउ. हाँ बेटा, सेम इंटरेस्ट रेट के साथ खेलेंगे. कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्पेकुलेटर बेटा, प्योर मटका. आप यश और आप और मैं और ये हम सब फिलहाल कोई पोजीशन ओपन नहीं है. हम खाली क्यों उतर रहे हैं मार्केट में? क्योंकि हम लोगों को इंटरेस्ट रेट से पैसा कमाना है. और अगर हम लोगों को इंटरेस्ट रेट से पैसा कमाना है तो आपको यह देखना है कि आपका मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्या है, बस. तो ये आपके लिए एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गया. क्लियर? कॉपी दिस फर्स्ट, कॉपी दिस फास्ट. नाउ guys, take the situation 2. Situation 2. What will change now? Yes, so now in situation 2, Yash expects Libor to grow or down. He less than that, and therefore he would love to pay Libor. उसको ऐसा लग रहा है कि Libor नीचे जाने वाला है. Pay Libor and receive fixed. This is your comment, guys. Come on, what will happen now? 7.5%. Profit of. So your उसका expectation right निकला. तो your he will receive how much बेटा? He will receive the difference 0.5%. ये क्या हो गया बेटा उसके लिए? प्रॉफिट हो गया. And here he will pay the difference, that is 1.5%. I think speculator is very easy. Done, sorted. Pakka. 1%. Oh, sorry. Clear speculator, clear? Done beta, done. Now the game starts. ना अभी इधर देखो. In exam, speculator is the least asked. There are two good topics. One is hedger, another is how can we reduce borrowing cost. This is the major topic which we will definitely not take up today. But hedger will take good half an hour. Don't worry. So hedger के point of view से कैसे गेम खेला जाएगा वो आप मेरे को हेल्प करो. So we are right now estimating only for hedger. Okay, so what is hedger? First, let's create scenario. Who will hedge this? Someone who has an open position. So now, ओए, मेरी बात सुनो. Someone who has an open position. In fact, two people having open position and are impacted with the similar movement in interest rate. For example, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी को फायदा है और किसी ना किसी को नुकसान है. अब जिसको फायदा हो रहा है और जिसको नुकसान हो रहा है, क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो किसी को फायदा हो रहा है और किसी को नुकसान हो रहा है. डू यू ऑल एग्री? अब जिसको फायदा हो रहा है और जिसको नुकसान हो रहा है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से, क्या वो लोग एक दूसरे के साथ स्वैप अरेंजमेंट करेंगे? जिसको फायदा हो रहा है वो तो आएगा ही नहीं. करेक्ट. अब गेम कौन खेलेगा दोस्तों? इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से एक बंदे को नुकसान हो रहा है, दूसरे को भी नुकसान हो रहा है, दोनों को नुकसान हो रहा है, तो ही वो लोग क्या करेंगे? They will meet together. So now I want to define these two people first. Karan, if you can unmute and tell me who these two people would be. I am saying let us, our underlying principle is interest rate बढ़ रहा है. इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. वी हैव अज्यूम्ड दैट इंटरेस्ट रेट इज गोइंग. अब ये किसको किसको नुकसान करेगा? किसको किसको नुकसान करेगा? बोरोवर को नुकसान करेगा? बोरोवर को नुकसान नहीं करेगा. द बोरोवर हु हैव बॉट ऑन फ्लोटिंग. Borrower who have bought on floating. The borrower have already bought on fix. So he is so not worried. Because when I am talking about interest rate going up, I am just talking about Libor. Now, एक और इन्वेस्टर को कब नुकसान करेगा ये?
इन्वेस्टर को तब नुकसान करेगा जब इन्वेस्टर फिक्स वाला. आर यू गेटिंग दिस क्लियरली? सो स्वैप डील will be only between the borrower and investor, and not only borrower and investor. Swap deal will be between the borrower who is floating and investor who is fixed. तो ही ये swap deal होगा, वरना there is no swap deal. Did you get this clear first? पक्का? Everybody? Sure? जाओ मैं आगे. So now what are we doing is, so we are doing interest rate swaps. Nobody copies for some time, please. Interest rate swaps. And we are talking about hedger. So the first principle is interest rate will increase. Interest rate will increase. अब मजा आएगा, ध्यान से. Interest rate increase. Create two scenarios. Come on. सबसे पहले let's talk on the borrower. What will happen? The borrower who is already with floating leg. Hello. Borrower is with floating leg. Say for example he is paying LIBOR plus 1%. Got it? Now ये उसका ओपन पोजीशन है 10 लाख के ऊपर या 1 करोड़ के ऊपर, जितना भी. उसको अब एक ऐसा इन्वेस्टर चाहिए जिसका भी 1 करोड़ के ऊपर या 10 लाख के ऊपर, सेम अमाउंट के ऊपर. What position does he has? He has a fixed leg. So now another is investor. मैं आमने सामने खड़ा कर रहा हूं दोनों को. Investor has a fixed leg. Investor has a fixed leg. Say for example 8.5%. Are you all there with me? What is this? This is their position right now. This is their open position. Now we need to decide a strategy. What would be the strategy here? What would be the strategy? Come on. What would be the strategy? Now please get into the strategy. First let's fix the strategy. Come on guys. What would be the strategy here? उसका already floating में है LIBOR plus 1. हाँ, borrower will sell what? He will sell swap. That means what he will do? ये इधर तो पे कर ही रहा है LIBOR plus 1. आगे भी पे करेगा ज्यादा. If you will sell, you will receive LIBOR or you will pay LIBOR. Simple. Let's keep it simple, guys. अभी ये strategies में let us first get that. Selling swap, you will pay LIBOR or you will receive LIBOR. यार ये तो कितनी बार हो गया. If you are selling swap, तो you will receive LIBOR or pay LIBOR. If you are buying swap, this is clear. Okay, everyone. Now please tell me the strategy. What should I receive LIBOR here or pay LIBOR? My interest rate is going up. What would I want to do? हाँ बेटा, I'll receive LIBOR. So my strategy would be, let's receive LIBOR and pay fix. कितना परसेंट? वो नहीं अवेलेबल है. से 9% अवेलेबल है मार्केट में. जो आपको एग्जैक्टली चाहिए वो नहीं है. अब मेरी बात सुनो. लेट्स टॉक अबाउट द गेम. So here I want to know what would be, come on, purely only think from the borrower perspective now. Only think from the borrower perspective. So borrower already had what? Open position. Borrower already had an open position, and now he is entering into the swap also. Okay. So if borrower is entering into the swap, what is the final effective rate आप लोगों के हिसाब से of the borrower? Simple. Final effective rate of the borrower. Finally borrower ने कितना पेमेंट किया, अब इसका दिमाग लगाओ. Please use your calculus, use your brains. I am requesting use pen pencil somewhere and plot it out. एक जगह पर अभी क्या कर रहा है वो, उसका ऑलरेडी borrower है तो उसका ऑलरेडी पेमेंट तो था ही. Now you figure that out how to do it. You will not modify this बेटा. ये स्वैप डिसाइड हुआ है. दिस इज द स्वैप फाइनलाइज. रिसीव लिबॉर एंड पे फिक्स से 9%, क्योंकि ऑलरेडी फिक्स लिबॉर बढ़ने वाला था
तो आप लोग ये डील में आ गए हो. अगर आप ये डील में आ गए हो, कृतार्थ मेरे को चाहिए आंसर फटाफट. एग्जैक्ट पेमेंट कितना होगा? कम ऑन, एग्जैक्ट पेमेंट कितना होगा? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना होगा प्लीज? चलो. नहीं प्रथम, नो मारवी. अच्छा, अभी ये स्ट्रैटेजी किसके लिए हम लोग ने बनाया? बोरोवर के लिए बनाया कि इन्वेस्टर के लिए बनाया? दोनों के. आप मेरी बात समझो. से फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनो. सबसे पहले यू आर अ बोरोवर. ओके, you are right now paying LIBOR plus 1%. Guys, you are a borrower. You are paying what beta? Answer देगा कोई? You are paying LIBOR plus 1%. If you are a borrower and you are paying LIBOR plus 1%, now you believe that, you sense that interest rate is going go up. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो आपको तो टेंशन आ गया, अचानक से टेंशन आ गया. तो आपने एक स्वैप साइन किया कि भाई साहब एक काम करो, मैं स्वैप करने को रेडी हूं. आई वॉन्ट टू रिसीव लिबोर. वाई आर यू रिसीविंग लिबोर? फर्स्ट डिसाइड दैट. वाई? बिकॉज यू एक्सपेक्ट लिबोर टू गो अप. बिकॉज यू एक्सपेक्ट द लिबोर टू गो अप, सो यू नाउ डिसाइडेड टू रिसीव लिबोर. सो इफ यू नाउ डिसाइडेड टू रिसीव लिबोर एंड पे हाउ मच परसेंट? 9%. Right now you are only borrower. Forget investor. Right now you are only borrower. Fair enough, everyone? So now I'm leaving two lines here and here. Let me write. Please pay attention. So original payment. Original pay. What was original pay? Come on. What was original pay? Original pay was LIBOR plus 1%. ये तो आपको पे करना पड़ेगा. ये आपका पैसा गया क्या आया? ये गया. Fair enough. अब thanks to swap you will now receive what? You will now receive ना, एक सेकेंड ना, मैं इधर हेडिंग दे देता हूं. हेजर हो ना बेटा, तो ऑलवेज लर्न वन थिंग. ड्यू टू स्वैप, थ्रू स्वैप. अब स्वैप के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा? स्वैप के थ्रू यू विल रिसीव LIBOR एंड पे 9%. Is this clear? Now if I put this in one line, it is LIBOR plus 1%. This is gone. ये भी गया और ये भी गया. प्लस मेरे को मिला क्या बेटा? LIBOR plus 9% देना पड़ा. So my negative LIBOR, positive LIBOR cut. My next payment, net payment is 10%. So here now my effective interest rate if I enter into this is how much percent? 10%. But you go find someone for this swap and you are done with this. You find someone for this swap and you are done with this. Did you understand this clearly? Pakka? 10% Marvi got wrong, Pratham wrong, Tanvi correct. एक सेकेंड. This is clear? Everyone? दोनों सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे. दोनों को एक ही टेंशन है बेटा. दोनों को टेंशन क्या है? दोनों को सेम टेंशन है ना. क्या टेंशन है? कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो वो लोग अरेंज करेंगे एक स्वैप के लिए. जो स्वैप क्या होने वाला है? वो लोग ऐसा स्वैप के लिए अरेंज करेंगे जहां पर उन लोगों को लिबोर मिले और वो पे करे फिक्स. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इज एक्सपेक्टिंग द इंटरेस्ट रेट टू गो अप. क्लियर? दिस इज क्लियर? ओए, now hold on. Go for a investor. Now you think from an investor perspective. I'll explain. Okay. A. I'll get that. Wait. Shh. Please look here. First of all, na, I wanted you to understand interest rate will increase. ये किसके लिए threat है? Borrower के लिए कि investor के लिए? ये दोनों के लिए. तो ये दो पार्टी है. तो अगर अभी फिलहाल है ना, हम लोग इसके बारे में नहीं सोच रहे. वी आर नॉट थिंकिंग फॉर हिम. करण, इज दिस क्लियर राइट नाउ? इज दिस क्लियर? नाउ यू आर अ बोरोवर. इफ यू आर अ बोरोवर, you are currently paying how much? LIBOR plus 1%. You were paying LIBOR plus 1. You went to the market, you want to swap this. Why you want to swap this? Because you believe that this is not in your favor. You are expecting LIBOR to go up. If you are expecting LIBOR to go up, what swap will you arrange?
What swap will you arrange? You will arrange for receiving LIBOR or paying LIBOR? Receiving LIBOR. So you will be ready to pay for fix whatever is the quote available in the market. So you went to the market, and in the market once क्या available था बेटा? In the market available was receive LIBOR and pay fix say 9. ये available है market. हाँ. ओके, अब तूने ये एंटर मारा. अब जैसे तू इसमें एंट्री मारेगा, अब तेरे साथ क्या होगा तू समझ. अब तेरे को ढूंढने का कि तेरा नेट इफेक्ट क्या होगा. You entered into it. You are now going to receive LIBOR and you are ready to pay what? 9%. अब ये स्वैप करने के कारण आपके साथ क्या हुआ चेक करो. Originally you were paying LIBOR. This was pay LIBOR and pay 1%. Everybody get it? Now you will receive LIBOR and pay 9%. एक सेकेंड रुक जाओ. So now eventually you are paying LIBOR, you are receiving LIBOR. That's gone. So you are left with only 1% pay and 9% pay. Total effective interest rate would be how much? 10%. But please, for God's sake, you had a floating position, yes. But आपकी जो exact floating position थी, शायद वो swap हो या ना हो. Swap available क्या था market में? LIBOR plus and pay 1 LIBOR and pay fix 9%. This is clear? Now, अच्छा, A with numbers. Let's do this with number. Suppose आपका estimation fail हो गया, तो क्या लगता है आपको? Will you be having same thing? Suppose your estimation failed. Let's take it. Right now you are paying LIBOR plus 1. कैलसी पे लेते हैं, मजा आएगा. मेरी बात ध्यान सुनना. सपोज करो LIBOR 10% हो गया, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे. अब मैं HDFC बैंक से मैंने लोन लिया था. तो मेरे को HDFC को कितना पे करना पड़ेगा? 10 plus 1. तो मेरा कितना पैसा गया? 11%. करेक्ट. माई मनी गॉन इज हाउ मच? 11%. लेट्स लुक इनटू इट. अब मैंने ये स्वैप अरेंज किया था. किसके साथ स्वैप अरेंज किया? कोई भी बैंक के साथ, से XYZ बैंक. अब XYZ में यू आर रिसीविंग हाउ मच? यू विल रिसीव हाउ मच गाइस? 10%. यू विल पे हाउ मच? यू विल पे हाउ मच? 9% ना बेटा. सो यू विल नेट रिसीव हाउ मच? 1%. आपने HDFC को कितना पेमेंट किया था अभी? 11%. आपको स्वैप के थ्रू पैसा कितना मिल गया? 1%. आपका नेट इफेक्टिव रेट कितना हो गया? 10%. Let's put it differently. You expected LIBOR to go up. LIBOR fell down to 6%. LIBOR fell down to how much percent? 6%. अभी आपको HDFC को कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 6 plus 1. How much? 7. अब आप इधर देखो मजा. You will receive how much? Hello. You will receive 6. And you will pay how much? Hello. 9. So your net payment is how much? हाँ? 3% ना? हाँ, मैंने 8 सुना इसका. Net payment is how much? 3%. अब आपने HDFC को कितना पे किया? ये स्वैप वाले को कितना पे करोगे? तो स्वैप अरेंज करने के कारण नाउ यू आर श्योर कि आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है? Irrespective of that. Everybody else clear? Now take the same advantage and get me for ये तुम लोग को कॉपी करने दूंगा मैं. मेरे को अभी खाली इसके पॉइंट ऑफ से बताओ ना. अल्टरनेटिवली इन्वेस्टर फिक्स लेग था, उसके पास 8.5% एंड नाउ ही एंटर इनटू दिस रेट. फिक्स था, उसके पास कितना था फिक्स गाइस? उसके फिक्स था 8.5%. आगम इज अवेक गाइस. लेट्स टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन. So investor had a fixed return of 8.5%. He now believes that LIBOR is giving more return. तो इसके यार इससे अच्छा तो मैं LIBOR लेता. तो अब वो स्वैप में अरेंज करेगा, मार्केट में जाके स्वैप करेगा. आई वांट टू रिसीव LIBOR एंड पे फिक्स. सो रिसीव LIBOR वॉट एवर विल बी द LIBOR एंड आई रेडी टू पे. अभी उसको मार्केट में वो 9% में मिल गया. तो अभी उसका फाइनल अमाउंट बताओ मेरे को. आंसर दे रहा है LIBOR माइनस. खत्म गाइस. That's the answer. So here, what will we now do? So my original pay. Chup re regado. My original pay is how much? 8.5%. Huh? Sorry, majak. Original receive 8.5% through swap. क्या मिल रहा है बोलो मेरे को swap के through? Receive how much? LIBOR. And pay how much? 9%. So now if you see,
this is received, this is received, this is pay. So your net pay is how much? So your effective interest rate would be LIBOR minus 0.5%. That's it. So ये उसने ट्रांजैक्शन करके ये फिक्स कर दिया. हेजर है ना, हेजर अपना कमिटमेंट फिक्स कर देगा. हेजर वॉट एवर ही वॉन्ट्स, एंड ऑब्वियसली he will be in either of the cases, he will be moving away, matlab he will define the position. That is what hedger is going to do. Fair enough. Give heading interest rate swap hedging, interest rate swap hedging. Ready? Now guys, write down interest rate decrease. So borrower को तब टेंशन आएगा जब उसका फिक्स लेग्ड है से 9%, और इन्वेस्टर को तब टेंशन आएगा जब उसका फ्लोटिंग लेगे. ठीक है, कितना है वो बाद में देता हूं, तुम लोग वैसे ही कंफ्यूज हो जा रहे हो. स्ट्रैटेजी बोलो चलो. नाउ यू आर अ बोरोवर और इन्वेस्टर, फॉरगेट इट. यू बिलीव दैट द इंटरेस्ट रेट विल डिक्रीज. सो वुड यू लाइक टू रिसीव लिबोर और पे लिबोर? सो यू वुड लाइक टू रिसीव फिक्स एंड पे फ्लोटिंग. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल फिक्स मार्केट में अवेलेबल है 8.5% का, उसके सामने आपको मिलेगा लिबोर प्लस 1%. एक काम करो, मेरे को पूरा इफेक्टिव रेट तुम लोग, मैं इसका भी पोजीशन लिख देता हूं. इसका करंटली से फ्लोटिंग इज लिबोर प्लस 1% है. चलो, गेट मी आंसर फॉर बोथ ऑफ देयर इफेक्टिव रेट. कम ऑन, क्विक, फास्ट. वो investor receives how much? 8.5. Nice. And borrower pays how much? Negative L plus 1.5 ना. हाँ वही पे करेगा, इस तो नेगेटिव आएगा ना. चलो, so your I'll curate my effective rate later for both of them. Right now this guy will pay, original pay 9%, swap के through he will receive 8.5% and pay how much? LIBOR plus 1%. So eventually can I say he is paying how much? So his effective rate would be LIBOR plus, and this guy's effective rate would be pay originally LIBOR plus 1%, swap के through he will receive how much beta? बोलो बोलो बोलो. He will receive 8.5% and pay how much? L plus 1%. ये पे नहीं, ये रिसीव आएगा ना, इधर इन्वेस्टर है तो ये तो सब कट हो जाएगा, इसका डायरेक्ट 8.5 आएगा. So much was for your hedger. Fair enough, everyone. ठीक है, I think we have time. Can we? Only thing is that next topic will not get over in half an hour. Otherwise I would have done it. But please कल सुबह पहले 15 मिनट बहुत मैटर करेंगे. See you all tomorrow. बरोबर है. ये देख ना, इसका ही ले ले. तू बोरोवर था, तूने 10 लाख का बोरो करा, तू 10 लाख के ऊपर तू 9% पे करने वाला था. बरोबर है. अब तेरे को लग रहा है कि यार इंटरेस्ट रेट कम हो रहा, तो तेरे को 9% नहीं देना है. अगर तू इसके ऊपर 10 लाख पे 9% देता तो तेरे को कितना आएगा? 10 लाख पे 9% आएगा इंटरेस्ट. हाँ 90,000, 90,000 नहीं बराबर 90,000. अब तेरे को लग रहा है इंटरेस्ट रेट कम होने वाला, से फॉर एग्जाम्पल 7%, तो अब तू गेम खेल. ये सब करने से उसका नेट कितना हो गया?
तो 7 + 1.5 कितना हो गया उसका 8.5%. तब उसको कितना देना है नेट पेमेंट उसका, वो ट्रांजैक्शन मैं बोलता हूँ. सबसे पहले तो वो इसको 10 लाख दे देगा, 10 लाख के ऊपर 9% देगा, 90,000 पेड, बरोबर है. अब उसको 10 लाख के ऊपर 8.5% मिल जाएगा, 85,000 रिसीव्ड. अब उसको 10 लाख के ऊपर लिबोर प्लस 1% देना है, पे करना है. तो लिबोर कितना है 7% लिया था अभी हम लोग ने एग्जांपल में, तो 7 + 1 उसको 8% और पे करना है. तो वो 1 लाख के ऊपर 8% पे करेगा. तो कितना पे किया उसने 80,000 पे. तो 90,000 पे, 85,000 रुपीज रिसीव, 80,000 पे. अगर वो स्पेकुलेटर होता तो वो उसको डायरेक्ट फायदा हो गया होता इधर 5,000 का. वो जो फायदा उसको इधर एडजस्ट हो गया क्योंकि उसका ओपन पोजीशन था. इसके लिए उसका रेट यह है, समझा.